Hello and good evening to all of you. I welcome you all at the SAAVAL classes for the preparation of Master Cadre English exam. Today is going to be our 28th session of the multiple choice type questions. So yes, today we will be winding up the modern age. तो आज के MCQs में you will get mixed questions from all the writers of this particular age which we have completed in our MCQs. But the focus will be on W.B. Yeats and T.S. Eliot, of course. Okay, so before starting with the question series, there is an information for all of you regarding the पेड ग्रुप्स. हमारे सभी सब्जेक्ट के पेड ग्रुप्स चल रहे हैं और उनके लिए आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू हैव टू कॉन्टैक्ट दीपक सर ऑन दिस नंबर, राइट. इंग्लिश का हमारा जो सेकंड पेड ग्रुप है, वी हैव जस्ट स्टार्टेड इट फ्यू डेज बैक. So if you are willing to join, if you're preparing for that, and I would suggest you should join. अगर आप अपनी एक पोस्ट ग्रैब करना चाहते हैं तो प्लीज join that group, and for that you have to contact Deepak sir on this number, right? So yes, we are beginning with the question series for today. So the question number 1 is, a dialogue between self and soul is written by. A dialogue between self and soul is written by John Donne, W.B. Yeats, T.S. Eliot or Thomas Hardy. Who is the writer of A Dialogue Between Self and Soul? हाँ जी, writer of Dialogue Between Self and Soul. Yes, it is John. It is you are confused, and you people tried to confuse me as well. हाँ जी, अभी भी सोच लीजिए, मैं फिर आगे बढ़ूंगी. A Dialogue Between Self and Soul is written by John Donne, Yeats, T.S. Eliot और थॉमस हार्डी. कौन कौन श्योर हैं? क्योंकि सबके मिक्स आंसर्स आ रहे हैं मुझे. कौन कौन श्योर है पहले तो मुझे ये बताओ. Only then I will move ahead. हाँ जी. So what is the answer of this question? It is W.B. Yeats. It is W.B. Yeats बच्चे. डन का भी है ये, लेकिन थोड़ा सा फर्क है नाम में, मुझे जहां तक याद आ रहा है, राइट. यहां पे ये W.B. Yeats का है, जॉन डन का भी है, दैट ऑल्सो आई अग्री, लेकिन एक आधे वर्ड का फर्क है, इतना मुझे याद आ रहा है, ठीक है. लेकिन प्रॉपरली जो है रिकॉल नहीं कर पा रही, बट आई विल टेल यू, राइट. चलो, then we move on to question number 2. The Melstock Choir, a rural painting of the Dutch school, is the subtitle of. The Melstock Choir, a rural painting of the Dutch school, is the subtitle of Desperate Remedies, Pair of Blue Eyes, Under the Greenwood Tree or The Woodlanders. हाँ जी, किसका सबटाइटल है ये? मेलस्टॉक क्वायर. आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है पहले. Yes, right, very good. It is the subtitle of Under the Greenwood Tree, right, and it was taken from the title was taken from As You Like It, है ना? Yes. Then we move on to question number 3, which are almost never present in Conrad's novels. कॉनरेड के नॉवल में ये कभी भी प्रेजेंट नहीं होते हैं. अगर हमने कुछ नॉवेल्स की हमने समरी को ब्रीफ में डिस्कस भी करा है, ठीक है,
So what do you never find in Conrad's novels? Villains, heroes, women, or old characters, which are almost never present in Conrad's novels? Yes, you have to guess it. Are they villains? Villains होते हैं कि नहीं होते कॉनरेड की नॉवल में? हीरोज होते हैं कि नहीं होते? विमेन ओल्ड कैरेक्टर्स कौन नहीं होते? They are actually women. Yes, some people have answered it right. Very good. They are women. Women. हमने जितने भी देखो नॉवेल्स की बात करी है, हम अगर सिर्फ हार्ट ऑफ डार्कनेस का ही एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे, देयर आर सम ओल्ड कैरेक्टर्स. हार्ट ऑफ डार्कनेस में अगर बात करते हैं ना, तो वहां पे जो कर्ट्स है, ही हैज आल्सो ग्रोन ओल्ड. ठीक है, जो अकाउंटेंट है जो हमेशा व्हाइट कपड़े पहन के रखता है, उसका एक ओल्ड एज्ड अंकल आता है जो एक्चुअल में उसको भड़काता है कि दैट यू शुड compete with कर्ड्स, राइट बच्चे? इसीलिए इसीलिए है ऑलमोस्ट. यस, लॉर्ड जिम की बिलवेड है, आई एग्री. ऑलमोस्ट नेवर प्रेजेंट, राइट? ऑलमोस्ट नेवर कि मतलब ना मात्र, ना के बराबर. ओके. Then we move on to question number 4. In which English town the morals live? हाँ जी, सन्स एंड लवर्स में जो मॉरल्स हैं वो कहाँ रहते हैं? वेस्टवुड में, ईस्टवुड में और कोक टाउन में? Where do the morals live? Where do the morals live in Sons and Lovers? Is it Westwood, is it Eastwood, or is it Coke Town? It is. And if I say Coke Town is in hard times, Coke Town is in hard times, it is Westwood. Very good, Babu. Very good, bache. It's Westwood. Okay, no problem. Then we move on to question number 5. A room of one's own. Very good, Raman. Very good, bache. A room of one's own explores women both as dash of and characters in fiction. Women, feminists, narrators, or writers. A room of one's own explores women both as dash of and characters in fiction. What should be filled here in this blank? Women, feminists, narrators, or writers? How will you fill this blank? With which word? Explores women as both. और हमने ये चीज बार बार पढ़ी है, गलती नहीं करनी है यहाँ पे, गलती नहीं करनी है यहाँ पे. Yes, very good, Babu. Ravneet is also right. Taksh, Ritu, Aryan, Anchal, Babu, yes. It is D. बच्चे हमने बात नहीं करी थी that a woman in order to become a writer should have a room of her own. ठीक है, तो उसने दोनों तरीके से women as characters और women as writers बात करी है a room of one's own में. Okay, yes. Then we move on to question number 6, and the question number 6 for today is, who appoints Orlando as a steward, treasurer, and her lover? Hanji. Yes, exactly, Khushi. She talks about money as well. Room and her own money. Yes. Who appoints Orlando as a steward, treasurer, and her lover? Nick Green, Elizabeth I, Harry, or Archduchess Harriet? Who appoints Orlando as a steward, treasurer, and her lover as well? Which of these? Okay, very good, Rajni. Very well done, बच्चे. हाँ जी, so quickly answer this question. कौन अपॉइंट करता है ऑर्लैंडो को? अपना स्टीवर्ड,
मतलब एक तरह से हमेशा उसके साथ रहने वाला, उसका ट्रेजरर जो उसके पैसों का हमेशा ध्यान रखता है, और अपना लवर भी. वेरी वेरी गुड. यस, इट इज एलिजाबेथ. Is it? It is Elizabeth 1. Very well done, all of you. Okay, then next we move on to question number 7. Question number 7 is, which work of Virginia Woolf ends with this statement? And since we are different, our helps must be different. क्योंकि हम different हैं, तो हमें जो help कर सकता है, जिस तरीके से help कर सकता है, वो भी different ही होगी. So, is it in the Three Guineas, A Room of One's Own, Orlando, or To the Lighthouse? In which work you find this statement, or which work ends with this statement? Again? Okay, yes. Which work ends with this? Yes, very good. देखो, जैसे मैं हमेशा तरीका बताती हूँ, A Room of One's Own, तो जैसे मैं हमेशा तरीका बताती हूँ कि कई बार बहुत सारी चीजें हमें श्योर नहीं होती, तो just like read the statement again and again, तो आपके माइंड में पक्का स्ट्राइक करेगा. तो जो हम लाइन पढ़ते हैं, है ना, देखो, टू द लाइट हाउस में हमें पता है ऐसी कोई बात नहीं करी है, ऑरलैंडो में होमोसेक्सुअलिटी की बात करी है कंफ्यूजन अब क्रिएट होने वाली है थ्री गिनीज, क्योंकि वो भी फेमिनिस्ट वर्क है ना, और रूम ऑफ वंस ओन. लेकिन जब हम पहले इसके बारे में कुछ चीजें डिस्कस कर चुके हैं तो हमें ध्यान में आ जाता है दैट यस, what different things are required by women, that must be the idea from the work A Room of One's Own, without any doubt, है ना. Yes, then we move on to question number 8. Which caves do Edel and Mrs. Moore go to visit with Aziz? कौन सी caves visit करने जाते हैं वो? मालाबार caves, महाबार caves और माराबार caves? Yes, which caves do Miss Edel and Mrs. Moore go to visit with Aziz? Which are the caves? Which are the caves? See, just because one sound, you people got confused. They are Marabar caves. Marabar caves, not Malabar caves. हमने पढ़ा था ना कि जो सिटी दिखाई, जो टाउन दिखाया चंद्रपुर, दैट वाज अ फिक्शनल टाउन. तो मालाबार केव्स तो असलियत में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो भी फिक्शनली क्रिएट करेगा ना राइटर, है ना. तो दैट इज व्हाई Marabar caves. Okay, then we move on to question number 9. To whom Yeats referred to as the great artificer of God who uttered great truth to a little clan. किसको कहा उसने great artificer? William Blake, T.S. Eliot, Matthew Arnold or Wordsworth? To whom Yeats referred to as the great artificer of God? कि भगवान ने इस बंदे को घड़ के बनाया है, जिसने कि अपनी क्लैन को, जिसने कि अपनी जनरेशन को जो है सच से सामना करवाया. कोई बात नहीं, बबली, इट हैपेंस समटाइम्स. किसके लिए बोला येट्स ने? अगेन आई थिंक इट्स अ न्यू वन, है ना, इट्स अ न्यू क्वेश्चन. नेवर माइंड, इट इज सेड अबाउट विलियम ब्लेक. He said it about William Blake, बच्चे. Okay, so note it down. Note it down. Yes, Urmil is right. Urmil is right. Okay, then we move on to question number 10. And the question number 10 is, who wrote the drama The Countess Kathleen? T.S. Eliot, W.B. Yeats, Samuel Beckett or Harold Pinter? हाँ जी. Who wrote the drama The Countess Kathleen? The Countess Kathleen is written by Eliot, Yeats, Beckett or Harold Pinter?
Yes, very good. It is written by W.B. Yeats, none other than W.B. Yeats. Very good. Then we move on to question number 11. Question number 11 is, in which part of the wasteland appears the words Shanti, Shanti, Shanti? हाँ जी, wasteland के 5 parts हैं और ये जो हिंदी श्लोक है, ठीक है, श्लोक तो नहीं, जो वर्ड्स हैं हम ये कहेंगे, तो ये किस chapter, I mean किस part में, out of these 5 parts, in which part this thing appears? The game of chess, the fire sermon, what the thunder said, or death by water? हाँ जी, very good रितु, रमन, आंचल, प्रीति, आर्यन, तक्ष, नीरज, संदीप, ओंकार, नूतन, उर्मिल, खुशी, बलजीत, लीशा, प्रीति, रजन, उर्मिल, बलजीत, जसबीर, बब्बू, नीलम, yes, Rahul, Jagtar, Sandeep, right, very good. It occurs in the part what the thunder said. What the thunder said, right, very, very good. एंड ऑब्वियसली जैसे येट्स बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था, हमने कल बात करी इसके बारे में, टी.एस. इलियट भी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था इंडियन जो है माइथोलॉजी से. ओके, वेरी गुड राजवीर. सो ऑल ऑफ यू जस्ट रीड Rajveer's message and she is telling an easy way to remember the 5 parts of wasteland in sequence. Okay, then we move on to question number 12. On which particular day Jude dies when the free degrees were distributed among scholars? हाँ जी, देखो उसकी बदकिस्मती है ना, इसी के बारे में है ये सारा नॉवल. तो जूड की बदकिस्मती कि जिस दिन वो बीमारी की वजह से मर रहा था, उसी दिन जो है फ्री डिग्रीज, जिनको जो डिग्री लेने के लिए, जो पढ़ाई करने के लिए वो क्राइस्टमिस्टर आया था. तो व्हाट इज दैट? बच्चे ये भी एक श्लोक आता है, दत्ता दम्यता दयाध्वम, ये भी एक आता है वेस्टलैंड में. यस, चैरिटी एंड डिग्निटी, ये कुछ मतलब होते हैं इनके. ओके, यस, इट हैपेंस ऑन which day Jude dies. On which day Jude dies? He dies on Remembrance Day. He dies on Remembrance Day, बच्चे. ये एक पर्टिकुलर दिन होता है Remembrance Day, जब वो अपने जो, जैसे हमारे कुछ सोल्जर्स को हम याद करते हैं, तो वैसे वो अपने जो है पैट्रियट्स को, मार्टियर्स को याद करते ये एक दिन मनाते हैं. और उस दिन जो है वो इस तरीके से, पता नहीं अब एग्जैक्टली ये होता है कि नहीं, डिग्रीज कोई फ्री में तो देगा नहीं, ठीक है, तो पर जूट ऑब्सक्योर में ये हो रहा था. तो दैट पर्टिकुलर डे वाज द रिमेम्बरेंस डे, ठीक है, ये याद रखिएगा. So now we move on to question number 13, and the question number 13 is, which of these novels by Conrad is a tale of Russian revolutionaries? और इसकी इस नॉवल की जो सेटिंग है, it is set in Russia only. Under Western Eyes, Inheritors, Romance, or Chance? Which of these novels by Conrad is a novel of Russian revolutionaries? It is, yes, come on, you know the answer, I'm waiting for. Is a tale of Russian revolutionaries. Okay, very, very good. Yes, very well done, all of you. It is Under Western Eyes. Yes, Under Western Eyes is a tale of Russian revolutionaries. Right, very good, all of you, very good. Then we move on to question number 4. How many tempters come to persuade Beckett for one or the other thing in Murder in the Cathedral? जो बेकेट को अपने तरफ खींचते हैं, है ना, कभी कोई उसका पुराना फ्रेंड आता है, कभी बैरन्स आते हैं, है ना, और लास्ट में जो आता है, जो उसने एक्सपेक्ट नहीं करा होता, टेम्पटेशन, जो उसको मार्टरडम के लिए, सैक्रिफाइस के लिए जो है इनकरेज करता है. देयर आर टोटल
Yes, again, very good, all of you. There are total 4 tempters. Very well done. Yes, 4 tempters total. Then we move on to, और 4 ही नाइट्स आते हैं, ठीक है. लास्ट में मर्डर करने के लिए कैथीड्रल में 4 ही नाइट्स आते हैं और कैथीड्रल में 3 प्रीस्ट होते हैं, ठीक है. प्रीस्ट जो होते हैं वो सिर्फ 3 होते हैं, जो बेकेट को समझाने की कोशिश करते हैं. उसको बोलते हैं that you should run away from here because King Henry's knights may come anytime to attack you, to kill you. Okay? Yes. Then we move on to question number 15. In which year Yeats's famous poem A Prayer for My Daughter got published? किस साल में published हुई Prayer for My Daughter? 1920, 21, 22 or 24? It got published in? It got published in, yes, very good, Sandeep, Ginny, Preeti, Ritu, Khushi, Rajveer, Gurpreet, Aryan, Rajinder, Urmil, Kanta, Neeraj, Rajni, Rajan, Baljeet, Gurmeet, yes. All are right. Omkar, Urmil, Suman, Jagtar, Raman, Satnam, Nutan, Jaswinder, Harjinder, Babli, very good. 1921. Anjal is also right. But why you want to take the screenshot? If you are in the free group, you will get these PDFs, no? Okay, then we move on to question number 16. Under whose influence Eliot wrote Proof Rock? किससे इंस्पायर होकर लिखी थी प्रूफ रॉक टी.एस. इलियट ने? लाफॉर्ग, रिम्बाउड और मैलरम? लाफॉर्ग, रिम्बाउड और मैलरम? Under whose influence Eliot wrote Proof Rock? Eliot was inspired from? Yes, very good, very good. Laforgue. He was inspired from Laforgue. Right. And the question number 17 is, in which collection Among School Children got published? Among School Children, किस collection में publish हुआ था? The Rose, The Responsibilities और The Tower? हाँ जी, किस collection में publish हुआ था? Among School Children, The Rose, The Responsibilities or The Tower? Among School Children got published in? Right, very good. It got published in The Tower, not The Rose. Not The Rose. It got published in The Tower. Yes, very good. Very good to those who have answered correct. Very well done. The next is an information for all of you regarding the free WhatsApp group. आपको अपना नाम और मास्टर कीडर का सब्जेक्ट जो है वो इस नंबर पे सेंड करना है and you will be part of the free WhatsApp group where you will get the study material totally free of your subject for which you are preparing. Right? Yes. Then we move on to question number 18 and the question number 18 is question number 18 आज का हमारा है Mrs. Warren's Profession written by G.B. Shaw is a follow-up of, या ये कह दिया जाता है कि थीम जो है, ठीक है, थीम जो है वो मिसेस वॉरेन प्रोफेशन की अपने ही एक और ड्रामा से जीबी शॉ ने उठाई थी. बच्चे, yes Rajveer, बच्चे, I'll pass on this message to sir and you people will get their PDFs by tomorrow, the remaining ones. Okay. Arms and the Man, Cashel, Byron's Profession, Pygmalion or Getting Married? हाँ जी, Mrs. Warren's Profession किसका follow up है? Or we can say that both these dramas by G.B. Shaw have same theme, which is the follow up of Mrs. From which drama? Yes, very good. Yes, very well done. It is the follow up of Cashel, Byron's Profession. The name itself is giving us an idea, है ना? The name itself is giving us an idea. Okay. Then we move on to question number 19.
What is the theme of Florence's novel Women in Love? Women in Love की थीम बतानी है आपको. Is it feminism, bisexuality, homosexuality or transgenderism? What is the theme of Florence's novel Women in Love? Florence's novel Women in Love की थीम क्या है? It is very good. Very good, Urmil. Khushi, Neelam, Ritu, Lisha, Rupinder, Urmil, Preeti, Rajan, Dilbag, Baljeet, Ravneet, Nutan, Neeraj. Yes, it is homosexuality. तो लेक्चर खत्म होते ही बाइसेक्सुअलिटी और होमोसेक्सुअलिटी की मीनिंग्स पढ़िएगा गूगल पे, ठीक है? ओके. हाउ इज ऑलिवर मेलर्स एसोसिएटेड विद लेडी चैटले? ऑलिवर मेलर्स कौन है? लवर, हस्बैंड, फ्रेंड और नेबर? आई ऑलवेज टेक योर नेम खुशी. मैं खुश हो जाती हूँ तुम्हारा नाम लेके, खुशी. Okay, how is Oliver Mellers associated with Lady Chatterley? Lover, husband, friend or neighbor? हाँ जी, क्या रिश्ता है लेडी चैटरले के साथ मिस्टर ऑलिवर का? He is one of Lady Chatterley's lover, जो उनके घर पे एक गेम कीपर भी है. ओके, जो उनके घर पे एक गेम कीपर भी है. Yes. Then we come on to question number 21. And the question number 21 is, who praised Ulysses with these words? I hold this book to which we are all indebted and from which none of us can escape. Hanji, who praised Ulysses with these words? I hold this book to which we all are indebted. ठीक है, यूलिसेस के बारे में बोला उन्होंने कि हम सब इस बुक के कर्जाई हैं, right? And from which none of us can escape. It's said by Virginia Woolf, T.S. Eliot, Yeats or G.B. Shaw. Yes, I'm getting so much right answers, so many. Yes, T.S. Eliot, very good. It's T.S. Eliot, right? Then we move on to question number 22. From which of these two short stories Mrs. Dalloway is created? Mrs. Dalloway दो शॉर्ट स्टोरीज पहले लिखी गई थी, फिर उन शॉर्ट स्टोरीज को जोड़ के जो है नॉवल बना दिया गया, राइट? ऑब्वियसली और भी चीजें ऐड करी गई, पर बेसिकली ये दो शॉर्ट स्टोरीज से स्टार्ट करा वर्जीनिया वुल्फ ने. Mrs. Dalloway in Bond Street, The Prime Minister, The Smiths. Which is the correct one? Mrs. Dalloway in Bond Street, The Prime Minister or The Smiths? Hanji, yes, I'm getting right answers. Very good. Yes, all of you. It is both A and B, both these. And this was the unfinished one. ये भी याद रख लीजिएगा बात, ठीक है? ये शॉर्ट स्टोरी अनफिनिश्ड थी वर्जीनिया वुल्फ की, और फिर उसने दोनों को जोड़ के और चीजें मिला मिलू के नॉवल बना दिया मिसेस डेलोवे. ओके, क्योंकि इसमें एक इंसिडेंट है ना, दैट व्हेन शी गोज टू डू द शॉपिंग इन द बॉन्ड स्ट्रीट, तो एक ब्लैक कार वहां से निकलती है और लोग जो है खड़ जाते हैं, रुक जाते हैं विदाउट इवन थिंकिंग कि कोई जरूरी तो नहीं हर ब्लैक गाड़ी में जो है प्राइम मिनिस्टर ही हो, है ना? यस, तो इसलिए टाइटल रखा था द प्राइम मिनिस्टर वर्जीनिया वुल्फ ने. Now the next question number 23 for all of you is, who makes the painting of Mrs. Ramsay and James in the Lighthouse? Lily Briscoe, Charles Tensley, Minta Doyle or Paul Raleigh? किसकी पेंटिंग बनाती है, कौन पेंटिंग बनाता है मिसेस रामसे और जेम्स की इनटू द लाइट हाउस में? Who is the painter, or we can ask, who is the painter in To the Lighthouse by Virginia Woolf? Yes, very good. It is Lily Briscoe. Amazing, all of you are. Very nice.
Then we move on to question number 24. Which of these plays by Eliot is written in the style of comedy of manners, popular in restoration comedy या popular in restoration age? ठीक है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स के स्टाइल में ही लिखा इलियट ने ये जो है अपना ड्रामा. तो okay bubbly, I will consider this. Yes, which is that drama? The Elder Statesman, The Cocktail Party, The Family Reunion, or Sweeney Agonistes? Which is the one written in restoration style? It is actually the Family Reunion, बच्चे, not the Cocktail Party. It is Family Reunion. Okay? कॉकटेल पार्टी में भी लगता तो है, लेकिन बात जो है बेसिकली करी जाती है वो फैमिली रियूनियन के बारे में करी जाती है. वेरी गुड संदीप, नूतन, सतनाम इज ऑल्सो राइट. यस, सम आर राइट. इट इज द फैमिली रियूनियन. कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं, कॉकटेल पार्टी में कैरेक्टर्स ज्यादा नहीं हैं. उर्मिल, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड कांता. Okay, then we move on to question number 25. On which post W.B. Yeats worked in Irish Free State? As an inspector, as a senator, as a professor or prime minister? क्या पोस्ट मिली थी W.B. Yeats को आयरलैंड की फ्री स्टेट में जब आयरलैंड फ्री हो गया था? What he became? He became inspector, senator, professor or prime minister? Yes. Let the answers come. Some more. Very good. Yes. He becomes the senator. Senator. Very, very good. Very well done. Then we move on to question number 26. In which essay Eliot developed his theory of impersonality? किस essay में theory of impersonality की बात करी? जो नेगेटिव कैपेबिलिटी, जैसे हाँ जी अमंग स्कूल चिल्ड्रन में मेंशन आता है इस पोएम का. एज अ सेनेटर ओनली ही वेंट टू विजिट दैट स्कूल, जहां पे वो छोटी छोटी लड़कियों को देख के मॉडगॉन को याद करना शुरू कर देता है ना? यस. इन विच एसे Eliot developed his theory of impersonality? Hamlet and his professor, three voices of poetry, tradition and individual talent, or four Elizabethan dramatists? Yes, I'm waiting for the right answers. Which is the correct one? Where do you find? Very good. Yes, tradition and individual talent में बच्चे tradition and individual talent में बात करी है theory of impersonality की. Right. Very good Sandeep. Right. Second part में. Yes. Okay. Then we move on to question number 27. Who is the writer of the philosophy of rhetoric published in 1936? कौन है राइटर philosophy of rhetoric के? F.R. Lewis, I.A. Richards, or William Emerson? Who is the writer of philosophy of rhetoric? The writer of philosophy of rhetoric is, yes, I'm waiting for your answers. It is right. यहाँ पे तो कोई डाउट है ही नहीं है हमें. It is I.A. Richards. I.A. Richards. Very, very good. Then we move on to next question, and the question number 28 is, I every day like miss saying something, but there are some students who are very much regular with this session, but I don't know why. I hope it's not that why they are not attending the class and why they are not live in this lecture. It's just like I was a little bit worried and I was thinking from so many days पर मैं बात नहीं कर पाई. But there are some students who were regular in all the beginning lectures of MCQs, but now I couldn't find them. Especially Sandeep was there. Sandeep Sidhu, है ना? Yes. So which of these critics also wrote poetry? I.A. Richards, F.R. Lewis, William Emerson? हाँ जी, कौन
इनमें से 2 क्रिटिक्स हैं जो पोइट्री भी लिखते हैं। हाँ एग्जैक्टली रूही, आई अंडरस्टैंड। यस खुशी, यू आर तो रेगुलर, और फिर भी मैं तुम्हारा नाम लेना भूल जाती हूँ। हाँ जी, which of these also wrote poetry? I.A. Richards, F.R. Lewis और विलियम एम्पसन? Yes, they are I.A. Richards and विलियम एम्पसन। बच्चे F.R. Lewis ने नहीं लिखी पोइट्री। F.R. Lewis ने, मैंने बहुत सर्च करा कि कहीं से भी अगर एक भी पोएम मिलती है तो मैं ये ऑप्शन नहीं डालूंगी, पर F.R. Lewis ने नहीं लिखी है। ठीक है, इट्स A and C। एम्पसन ने लिखी हैं कुछ पोएम्स, I.A. Richards भी, he was famous as a poet. Yes. Okay, then we move on to question number 29. In his essay, The Common Pursuit, Lewis said that it was Mr. Dash who made us fully conscious of the weakness of that tradition. किसके बारे में बोला लीविस ने ये अपने essay The Common Pursuit में? येट्स के बारे में, आर्नल्ड के बारे में, या इलियट के बारे में? और मैं हिंट देती हूँ कि देखो लाइन में ट्रेडिशन ही आ गया है ना। Who made us fully conscious of the weakness of that tradition? Yes, very good. It is Eliot, T.S. Eliot. Right, T.S. Eliot, है ना। और देखो जैसे मैं कहती रहती हूँ कि हिंट ढूंढा करो, किसी के बारे में श्योरिटी नहीं है तो हिंट ढूंढा करो। ठीक है, तो ट्रेडिशन की बात हुई है तो हम, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम तुक्का भी लगा रहे हैं ना तो तुक्का भी हमने सोच के लगाना है। ठीक है, ऐसे नहीं लगा देना आंखें बंद करके, जय माता दी करके टिक नहीं लगाना। ठीक है, हाँ जी। Then we move on to question number 30. In which year Yeats's The Celtic Twilight got published? 1893, 94, 92 और 1895? किस साल में पब्लिश हुआ The Celtic Twilight? Celtic Twilight got published in 1893, 94, 92 और 1895? हाँ जी, I'm waiting for some more answers. Please be quick. Got published in 1893 बच्चे, 1893 The Celtic Twilight, W.B. Yeats का जो वर्क है। Yes, right. Then we move on to question number 31. From where did Eliot borrow the original title for The Wasteland, He Do, The Police in Different Voices? अब I don't remember if I have told you this thing or not, but yes, you have to note it down कि वेस्टलैंड का जो ओरिजिनल टाइटल इलियट ने सोचा था वो सोचा था ये वाला, He Do the Police in Different Voices, और पहले 2 पार्ट्स ही इसमें इंक्लूडेड थे। ठीक है, फिर उन्होंने वो 5 पार्ट्स बना लिए एंड ही नेम्ड इट द वेस्टलैंड। पर ये जो पहला टाइटल था वो कहाँ से लिया था टी.एस. इलियट ने? Taken from a popular music hall song, James Joyce's Finnegan's Wake, Charles Dickens' Our Mutual Friend, or Mark Twain's Huckleberry Finn? Right, you all are like instantly giving me this answer. It was taken from Charles Dickens' Our Mutual Friend. Right, very, very good. Then we move on to question number 32. Which work is sometimes referred to as Eliot's conversion poem when he converted to Christianity? ठीक है, कौन सी पोएम है जो बोली जाती है कि इलियट की कन्वर्जन पोएम है? यस एग्जैक्टली खुशी, द हॉलो मैन, एश वेंसडे, बर्न्ट नॉटन और द वेस्टलैंड, which is called Eliot's conversion poem. Eliot's conversion poem is, yes, it is very good. Again, you all are very quick in that. It is Ash Wednesday. Very nice, very good. Then we move on to question number 33. And the question number 33 is, which poem of Yeats provided the title for a book of Chinua Achebe? South African writer है Chinua Achebe, right? तो उन्होंने अपने एक नॉवेल के लिए टाइटल उठाया
कन्वर्जन पोयम बच्चे जब उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करा था, he became Catholic Christian ना, तो चेनुआ अचीव के कौन से वर्क का नाम येट्स की पोएम से आता है? ईस्टर 1916, Sailing to Byzantium, Leda and the Swan, or Second Coming? It comes from, yes, it comes from the Second Coming. Very good. Second Coming. Yes. Very nice. Then we move on to question number 34. Things fall apart. Hanji, Barjinder ji, yes. Hanji. Things fall apart. जो इस पोएम की लाइन है वो उसके नॉवल का नाम है. Things fall apart. Thank you so much, Barjinder ji. Okay. Then we move on to question number 34. Which Irish folk hero and Red Branch leaders fight with the sea was the subject of Yeats's poem? किस आयरिश फोक हीरो को लेके जो है कुछ फाइट विद द सी जो है थीम पे बेस्ड जो पोएम्स हैं लिखी हैं, तो वो किस आयरिश फोक हीरो के बारे में है? कुचलेन, फिनियन, फिन मैकूल और काउंटेस कैथलीन? But there is no certainty about any kinds of exams as yet. There is no certainty about any kind of exams. होने हैं, नहीं होने हैं, कब होने हैं, कुछ नहीं पता. बच्चे, it is Cuchulain. It is Cuchulain. It is Cuchulain. Okay. Okay. Then we move on to Irish folk hero. इस तरीके से याद रखेंगे हम. Okay. Then we move on to question number 35. Where did Colonel Pickering work before coming back to London? हाँ जी, तो कहाँ काम कर रहे थे कर्नल पिकरिंग वापस आने से पहले लंदन? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और ढाका? Where was he working? कर्नल पिकरिंग, जिसके साथ बेट लगाता है हिगिंस, या जो हिगिंस के साथ बेट लगाता है that this girl can never change, and then Higgins takes it as a challenge. He was working in, yes, right. Very good, Preeti, Baljit, Kanta, Sandeep, Gini, Urmil, Manpreet, Jagtar, Ritu, Neeraj, Aanchal, Rajan, Ravneet, Raman. Yes, Raj. Yes, it is India. Right, India. Very good. Then we move on to question number 36. वैसे देखा जाए तो बड़े सारे ऐसे कैरेक्टर्स की बात आती है कई सारे ड्रामाज में, नॉवेल्स में जो इंडिया वर्क करके जाते हैं. ठीक है, जैसे मुझे याद आता है एक जॉन ऑसबर्न का लुक बैक इन एंगर है ना, तो उसमें भी बात करी है उसने जो हीरोइन है लुक बैक इन एंगर की, उसका फादर ही वाज आल्सो वर्किंग इन इंडिया एंड इट वाज सेड अबाउट हिम दैट ही लेफ्ट हिज डाइजेस्टिव सिस्टम इन इंडिया. वो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम इंडिया छोड़ के आया था. ओके, देन वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 36. John Sherman is a dash written by W.B. Yeats. Is it a novel? Is it a drama? Is it a poem or a novella? John Sherman. Is it a novel, drama or poem written by W.B. Yeats or novella? क्या है इनमें से जॉन शर्मन? Rasham, you are right, बच्चे. Did you know it or you're just guessing? Preeti is also right. Gini, Kanta, Baljit. Yes, it is a novella, बच्चे. It is a novella written by W.B. Yeats. Okay? Yes. Then we move on to question number 37. For which of his books Yeats said so? I dare say I delude myself in thinking this book my book of books. और वो कहता है कि चाहे मेरे लिए डिल्यूजन है, चाहे मुझे खुशी होती है, मैं अपने आप को ये डिल्यूजन में रख के मुझे अच्छा महसूस होता है कि ये मेरी बुक जो है किताबों में से किताब है. द सेल्टिक ट्वाइलाइट, द विजन और डियर्ड्रा. इस बुक के बारे में बोला खुद ये येट्स ने that this is books of the books. It is said about, yes Ritu, very good बच्चे. It is about the vision. Yes,
He said it about his book, The Vision. Yes, very, very good. Okay, then we move on to question number 38. Journey of the Magi by Eliot got published in Journey of the Magi, जो कि ड्रामेटिक मोनोलॉग है इलियट का लिखा हुआ, ये पब्लिश हुआ 1930 में, 1928, 1929 और 1940. In which year Journey of the Magi by Eliot got published? 1930, 1928, 1929 or 1940? It got published in, yes, 1930. It got published in 1930 बच्चे. Okay, it got published in 1930. Ash Wednesday भी 1930 में ही publish हुई थी. और ये जो पीरियड है ऑप्टिमिस्टिक पीरियड भी बोल दिया जाता है, जो लास्ट फेज था, ठीक है, जब कन्वर्ट हुआ टी.एस. इलियट, तो इसका काफी पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक फेज बोल दिया जाता है इलियट की पोइट्री का. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 39. Which poem by Eliot includes two epigraphs? Again, it is going to be very easy one. Mr. Kurtz, he dead, and a penny for the old guy fox. किस पोएम में आते हैं ये एपिग्राफ? Geronation, Prufrock, The Hollow Man or Ash Wednesday? In which poem you find these two epigraphs? Mr. Kurtz and the Guy Fawkes epigraph. Which poem starts with these epigraphs? Geronation, Prufrock, The Hollow Man, Ash Wednesday. I think I should not give options in some of the multiple questions, you know, these questions. Yes, it is The Hollow Man. Very, very good, but very good. Who wrote On Poetry and Poets, which was published in 1957? Who is the writer of On Poetry and Poets? Critical work. It's a critical work. Okay. Who is the writer of this critical essay? Matthew Arnold, W.B. Yeats, F.R. Lewis or T.S. Eliot? Who is the writer of On Poetry and Poets? On Poetry and Poets is written by T.S. Eliot. But it is written by, yes, very good. Very good. So at the end, again, for all of you, that if you need any kind of information, so you just have to call Deepak sir on this number. Or for Monday, what you're going to prepare is that we will be doing Indian writers for Monday, right? So for Monday, you will prepare yourselves with R.K. Narayan, Raja Rao, Arundhati Roy and Khushwant Singh, right? These are the four writers with which you have to be prepared for Monday. And for Monday MCQs, I will be adding some questions from linguistics also, right? From okay, not that tough, Baljeet, not that tough. Okay, so as I said that you have to prepare R.K. Narayan, and I might be changing because let's do this triumvirate. Raja Rao, right? ये triumvirate में जो जाने जाते थे, पहले हम इनको करेंगे, है ना? मुल्क राजानंद, मैंने चेंज कर दिए बच्चे, ठीक है? ये तीनों राइटर्स विद लिंग्विस्टिक्स, जिसमें जो आप सारा ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स का, टीजी ग्रामर वगैरह का भी पढ़ के रखेंगे, राइट? एंड सम लिटरेरी टर्म्स, वो मैं अपने हिसाब से ऐड करूंगी, ठीक है? कई दिन हो गए लिटरेरी टर्म्स आए नहीं है, तो ये सारा कुछ. ओके, सो दिस इज all you will be preparing for Monday's literary quiz. Okay, yes. So thank you so much for today. I'll see you now, not tomorrow, on Monday. So take care of yourselves. Enjoy your weekend a little bit. पर पढ़ना है ज़्यादा, ठीक है? संडे थोड़ा सा मना लेना, पर पढ़ना ज़्यादा, ठीक है? तो अब हम मंडे को मिलेंगे same time पे. Thank you so much for today and take care of yourselves. Have a good day.